Hello students, myself Priyanka welcoming you all once again to Maths online class. Yes dear students, in my last two videos I have explained you all the questions of exercise 4A. So question number 1 to question number 8 of exercise 4A has been explained in my last two videos. So if you have not checked those videos, I request you to please check those two videos to get the explanation of exercise 4A. Now, today I am ready to give you the solution, the explanation of next exercise, that is exercise 4B. So without wasting the time, let's begin with exercise 4B. Yes students, so the very first question of exercise 4B is compare the following fractions using the greater than or less than sign in the boxes. So there are some parts in this question and we have to compare those fractional number to find out which number is greater and which one is smaller. Fine. So let's begin with A part. So A part is 3 upon 7 and this side 1 upon 7. We have to compare that which one is greater. See students, whenever the denominator is same, then it is very easy to compare the fractional number. कभी भी अगर denominator same होंगे तो आपको fractional number को compare करना easy हो जाएगा. आप सिर्फ numerator को देखेंगे. You only have to see the numerator to compare. You see that denominators are same, 7, 7. And in numerators, here it is 3 and here it is 1. So it's very simple. Which one is greater? Obviously 3 is greater than 1. So sign will come towards 3. Okay. That means 3 upon 7 is greater than 1 upon 7. Now B part. In B part, it is 5 upon 9. Then one box 2 upon 9. Again in this part, you can see that denominators are same. So we have to compare the numerator. Which one is greater, 5 or 2? Yes, 5 is greater than 2. So sign will come towards 5. So 5 upon 9 is greater than 2 upon 9. Next, C part. In C part, it is 3 upon 10. Then one box, 7 upon 10. Here also, again, denominators are same and 3 is smaller than 7. So we have to put sign towards that number which is greater. So we will put the sign towards 7. And how you will read it? 3 upon 10 is smaller than 7 upon 10. Or you can say that 7 upon 10 is greater than 3 upon 10. So it's very simple. Whenever the denominators are same, then you have to compare the numerator, and whichever is greater towards that number you have to open the sign. Fine. Now let us move on to D part. In D part, it is 1 upon 5. Then this side 1 upon 3. Now see, denominators are different but numerators are same. So there are two rules in comparing the fractional number. एक रूल तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो ग्रेटर नंबर है आप उसकी तरफ साइन ओपन करेंगे. बट अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर नंबर है वो ग्रेटर नंबर होगा. ऑपोजिट रूल होगा. हेयर यू कैन सी दैट न्यूमरेटर्स आर सिमिलर. दोनों जगह न्यूमरेटर में वैल्यू 1 है तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर वैल्यू होगी एक्चुअली वही ग्रेटर वैल्यू होगी. सो here you see in denominator this side it is 5 and here it is 3. So from 5 and 3 actually 5 is looking greater to you, but I told you that opposite rule will follow here. So 5 will not be greater, here 3 will be greater. So sign will come towards 3. Got it students? आपको ये ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर सिमिलर है तो डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर वैल्यू होगी वही आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के अंदर जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो स्मॉलर ही रहेगी और जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो ग्रेटर ही रहेगी. फाइन. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, देन इट विल बी मोर क्लियर. नाउ ई पार्ट. सो इन ई पार्ट इट इज 1 upon 10, then one box is there
and then it is 1 upon 9. Again you can see students that numerator is same. Here 1 and 1. So I told you whenever numerators are same, then in denominator whichever value is smaller is actually greater. Okay, so from 10 and 9, smaller is 9. So right now this 9 will be greater than 10. So how you will read it? 1 upon 10 is smaller than 1 upon 9, or you can say 1 upon 9 is greater than 1 upon 10. Okay, see F part. In F part, it is again the numerator same 1 upon 8 and other side it is 1 upon 7. See, again the numerators are same. So numerator same है तो denominator में जो smaller value होगी वही greater value होगी. So from 8 and 7, the smaller is, yes, the smaller is 7. So the sign will go towards 1 upon 7 and we will read it as 1 upon 8 is smaller than 1 upon 7. Or you can say 1 upon 7 is greater than 1 upon 8. Now, after this, next part. Now in G part, it is 2 upon 5, 1 box, 1 upon 4. Now see, in this part, neither denominators are same nor numerators are same. इस part में आप देखेंगे denominators भी different है और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है. तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हो तो उस केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना है दैट विच फ्रैक्शनल नंबर इज ग्रेटर. Okay, so how we will do? I have already explained you the cross multiplication method in my previous class where I have explained you to find out two fractional numbers are equivalent or not. Last question of exercise 4A. So I told you their cross multiplication method. So the same method we have to follow here because the denominators are different. So first of all you will write by cross multiplication and then after writing that I told you you have to write the fractional values again. So 2 upon 5 and 1 upon 4 will be written again. Now make the sign of cross multiplication and I told you this side will be written firstly. So firstly this side you will write 2 multiplied by, arrow sign is going towards 4. So 2 will be multiplied by 4 and this side 5 will come first and the arrow sign is going towards 1. So 5 will be multiplied by 1. Now multiply. 2 into 4 will give you 8 and this side 5 into 1 will give you 5. Now see. Now to compare these numbers are easy. अब आप इसको easily compare कर सकते हो. आपको पता है 8 is greater than 5. So the sign will come towards this side. Now you have to write this fractional value again. अब आप वापस से fractional value लिखोगे जो question में given थी 2 upon 5, 1 upon 4. Because हमें numbers को compare नहीं करना है, हमें fractional values को compare करना है. तो पूरा आंसर कैलकुलेट करने के बाद में आप लास्ट में फ्रैक्शनल वैल्यू वापस लिखेंगे. अब साइन किस तरफ जा रहा है? टूवर्ड्स दिस साइड. सो वी हैव टू पुट द साइन टूवर्ड्स दिस साइड. दैट मीन्स 2 upon 5 इज ग्रेटर देन 1 upon 4. ये मेथड आप तभी यूज करेंगे जब आपके न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हो. अगर डिनोमिनेटर सेम है तब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमरेटर भी सेम है तभी भी आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं. बस एक डिफरेंस है, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो ग्रेटर वैल्यू ही ग्रेटर होगी और स्मॉलर वैल्यू ही स्मॉलर होगी. बट न्यूमरेटर अगर सेम होगा तो ग्रेटर वैल्यू स्मॉलर होगी और स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर होगी. ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है. बट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज में लेके और फाइंड आउट करना है दैट विच फ्रैक्शनल नंबर इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. आई होप you understood this thing. So let us move on to next part and that is part H. In part H it is 1 upon 6 then 1 box and then 4 upon 8. Now see students, in this part also you can see that denominators are different. Again if denominators are different then we have to follow cross multiplication method. So by again cross multiplication you will write it firstly. So by cross multiplication we will write the fractional values again 1 upon 6 and 4 upon 8. Then we will make the sign of cross multiplication here and then we will multiply
1 by 8. Remember students, firstly you will write this numerator of left hand side. आप हमेशा left hand side का numerator पहले लिखेंगे. Okay? So 1 will be multiplied by 8 and other side make a box in the center. 6 will be multiplied by number 4. Okay? Now multiply it in next step. So 8 ones are 8 and that side 6 fours are 24. Okay? Now you can easily find out which one is greater. Yes, of course 24 is greater than 8. Now again you will write the fractional value which is given in the question, 1 upon 6, and this side it will be 4 upon 8. So the sign is going towards the right hand side. So in fractional value also it will go towards the right hand side. So 4 upon 8 will be greater than 1 upon 6, or you can say in other way 1 upon 6 is smaller than 4 upon 8. Whichever side the sign is open, that side will be greater. So right now the sign is open towards 4 upon 8. So this 4 upon 8 is greater than 1 upon 6 and 1 upon 6 is smaller than 4 upon 8 because this sign is closed toward 1 upon 6. ये जो sign है वो closed है 1 upon 6 की तरफ. So it will be smaller and the other fractional number will be greater. So this is the answer of H part. I hope now this method is also clear to you. See students, the next part is part I. It is 1 upon 4, then one box 2 upon 6. Again, numerators are different and denominators are different. Both are different. So we will follow our method of cross multiplication. So first of all, as I told you, you will be writing by cross multiplication. And after writing this cross multiplication, you have to write the fractional values again. So 1 upon 4 and 2 upon 6 will be written again. Then make the sign of cross multiplication. And as I told you, first of all, this side will be written firstly. So here we will write 1 and it will be multiplied by number 6. In between we will make one box and this 4 will be multiplied by number 2. Then multiply it. 6 into 1 will give you 6 and other side 4 into 2 will give you what? It will give you 8. Now from 6 and 8, the greater number is obviously 8. So we will put the sign towards 8. Now as I told you, we have to write the fractional values again. So 1 upon 4 in between one box 2 upon 6. So sign is going towards right hand side. That means 2 upon 6 is greater than 1 upon 4, or you can say 1 upon 4 is smaller than 2 upon 6. Now let us move on to next part, that is part J, and it is 5 upon 6, then one box, and it is 11 upon 12. So this is your J part. Again, numerators are different, denominators are different. So we will follow our method of cross multiplication. So by cross multiplication, you will write it, and then after that I told you, you have to mention the fractional numbers again. 5 upon 6 and 11 upon 12 will come as it is. Now we will write the sign, make the sign of cross multiplication, and again this side 5 will be multiplied by 12 in between one box and 6 will be multiplied by number 11. Now multiply 5 into 12, you all know 12 5s are 60, and other side 11 into 6. So 11 into 6 is equals to 66. So from 60 and 66, the greater number is 66. So sign will go towards 66. Now again you have to write the fractional values, 5 upon 6, one box, and 11 upon 12. So yes, from 5 upon 6 and 11 upon 12, the greater one is now we have already calculated, right hand side is greater. So 11 upon 12 is greater than 5 upon 6 and 5 upon 6 is smaller than 11 upon 12. Okay students, now got this method? Okay, let us move on to the last two parts of question number first, and part K is 3 upon 8, then box 2 upon 7. Again, numerators are different, denominators are different. So we will follow our method of cross multiplication. So by cross multiplication, we will find out that which one is greater.
Firstly, I have written by cross multiplication. Now, I will be writing the fractional values again, 3 upon 10 and 2 upon 7. After writing this, we have to make the cross multiplication sign. Firstly, 3 will be written and 3 will be multiplied by number 7. Make one box in between. Then this 10 will be multiplied by number 2. Now, 3 into 7 is equals to 21 and other side 10 into 2 is equal to 20. So the greater number from 21 and 20 is, yes, it is 21. Now we will write the fractional values again, 3 upon 10 and 2 upon 7. Yes, students, so the sign will come towards this side. That means this 3 upon 10 is greater than 2 upon 7, or in other way 2 upon 7 is smaller than 3 upon 10. So this is the answer of part K. Let us move on to the last part of question number first. Now I hope all the parts are clear to you. So you can do it yourself. All the parts I request you to please do it yourself. Watch the complete video. Just understand how to do the questions, and then when you sit for doing your work in your notebook, then please do it yourself so that the things will be clear to you. When you will do it yourself, it will be more easy for you. Okay. See the last part again here. Numerators are different, denominators are different. So yes, we will follow our method by cross multiplication. So after cross multiplication, what you have to do? Yes, I told that after cross multiplication, we will be writing our fractional values again. So 2 upon 5 and 7 upon 10 will be written again, and the sign of cross multiply. Next step, 2 will be multiplied by 10. In between box and 5 will be multiplied by 7. So 10 twos are 20 will come in next step, and 5 sevens are is 35. So from 20 and 35, the greater one is 35, and now we will write the fractional values again. 2 upon 5 and other side it is 7 upon 10. So from 2 upon 5 and 7 upon 10, greater one is 35. That means 7 upon 10. So 2 upon 5 is 2 upon 5 is smaller than 7 upon 10, and 7 upon 10 is greater than 2 upon 5. So like this we have to do all the parts of question number first. Okay students, 3 मेथड हैं इसके अंदर. अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम होने के कारण न्यूमरेटर्स में जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगा और जो स्मॉलर है वो स्मॉलर रहेगा. सेकंड मेथड है अगर न्यूमरेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सेम होने से डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर है वो ग्रेटर होगा और जो ग्रेटर है वो स्मॉलर होगा. और थर्ड मेथड है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हो तो आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज में लेके और फाइंड आउट करना है दैट विच फ्रैक्शनल नंबर इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शनल नंबर इज स्मॉलर. I hope all these parts are clear to you. Yes students, let us now move on to question number 2 of exercise 4B. And students, there is one correction in question number 2A part. So I request you to please do that correction in your maths books. Okay. Question is somewhat incorrect. So you just mention this question which I have written here on board. It should be Preeti has 1 upon 5 of the total number of stems, okay, whereas Gopi has 2 upon 7 of the total number of stems. Who has more stems, Preeti or Gopi? Fine. आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर कुछ अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको करेक्ट करके ये क्वेश्चन लिखना है जो यहाँ मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन किया हुआ है. सो प्लीज मेक करेक्शन इन योर मैथ्स बुक. ओके. नाउ क्वेश्चन क्या है, प्रीति के पास में 1 अपॉन 5 है, 1 अपॉन 5 स्टेम्स हैं टोटल स्टेम्स में से, जबकि गोपी के पास में टोटल स्टेम्स के 2 अपॉन 7 है. सो गोपी और प्रीति में से किसके पास ज़्यादा स्टेम्स हैं ये हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स. जो टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स है उसका फ्रैक्शन यहाँ पे दे रखा है, बट टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स का नंबर नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर. तो सबसे पहले अगर टोटल नंबर का
टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स का नंबर नहीं गिवन है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, हम मानेंगे अपनी तरफ से कि टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स है 1. सो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स बी 1. हमने मान लिया कि कुल मिलाकर कितने स्टेम्स है, 1 स्टेम है. अब क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्रीति हैज़, एक तरफ गिवन है प्रीति का, प्रीति हैज़, यहाँ मैं एक बॉक्स बना रही हूँ क्योंकि इसको भी हमें कंपेयर करना है, और दूसरी तरफ है गोपी. फर्स्ट नेम प्रीति का लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने पहले प्रीति लिखा है. सेकंड नेम गोपी का है, इसलिए सेकंड पर गोपी मेंशन किया है. अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी, प्रीति हैज़ 1/5, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1/5 ऑफ टोटल, ठीक है. और दूसरी तरफ गोपी हैज़, गोपी के पास में कितना था, 2/7 ऑफ टोटल. प्रीति और गोपी का हमने पहले मेंशन कर दिया. अब ऑफ का मतलब, जब मैंने आपको बॉडमास सिखाया था, बॉडमास का फुल फॉर्म बताया था BODMAS, तो वहाँ पर B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर इस ऑफ को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या मेंशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. पहले आप लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्या है, हमने क्या कंसीडर किया था, टोटल 1. सो टोटल की जगह आ जाएगा यहाँ पर 1, फिर आप एक बॉक्स बनाएंगे 2/7. अगेन ऑफ की जगह आप मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई का साइन. रिमेंबर ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बॉडमास. अगेन टोटल कितना है 1, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई. किसी भी रेशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही रेशनल नंबर मिलता है. तो आप 1/5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 1/5 मिलेगा. इसी तरीके से जब आप 2/7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2/7 मिलेगा. अगेन नाउ वी हैव टू कंपेयर इट. 1/5 और 2/7 को हमें कंपेयर करना है कि दोनों फ्रैक्शनल नंबर में से कौन सा फ्रैक्शनल नंबर ग्रेटर है. आप देख सकते हैं न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ में लेंगे. अभी किया है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, हम लेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद का मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप मेंशन करेंगे 1/5 and 2/7. Then you will be putting the sign of cross multiplication, then start multiplying it. 1 will be multiplied by 7 and 5 will be multiplied by 2. So 1/7 will give you 7 and 5/2 will give you 10. So from 7 and 10, 10 is greater. That means write the fractional number again, 1/5 and 2/7. So 2/7 is greater than 1/5. और 2/7 किसका फ्रैक्शन था, देखिए 2/7 गोपी का फ्रैक्शन था. गोपी हैज़ 2/7 ऑफ टोटल, 2/7 ही ग्रेटर है. क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु हैज़ मोर स्टेम्स, प्रीति और गोपी. सो ऑब्वियसली नाउ इट इज क्लियर, गोपी हैज़ मोर स्टेम्स, गोपी के पास में ज़्यादा स्टेम्स है एज कंपेयर टू प्रीति. I hope students that this question is clear to you all. आपको इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो है टोटल नंबर नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो जो वैल्यू नहीं गिवन है उसको आप पहले 1 मानेंगे, ठीक है. देन प्रीति के पास में क्या था, 1/5 ऑफ, एंड ऑफ आई टोल्ड यू, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. टोटल की जगह हमने लेट किया था 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1. इसी तरीके से गोपी के पास में 2/7 ऑफ टोटल था, सो 2/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड देन 1. 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी रेशनल नंबर को तो आपको वापस सेम रेशनल नंबर मिलेगा. तो यहाँ पर 1/5 एंड यहाँ 2/7. इतना आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि किसके पास में कम स्टेम्स हैं और किसके पास में ज़्यादा स्टेम्स है. अभी यहाँ पर पूछा गया है किसके पास ज़्यादा स्टेम्स है, तो हमने गोपी का नाम लिखा. अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है किसके पास कम स्टेम्स हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर प्रीति का नाम लिखते, दैट प्रीति हैज़ लेस स्टेम्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. इट इज रॉबिन एंड फ्रेडी ईट कुकीज फ्रॉम अ जार. रॉबिन और फ्रेडी 2 बॉयज़ थे, उन्होंने एक जार में से कुछ कुकीज़ खाई. ओके,
नाउ रॉबिन ईट 3/16 ऑफ द कुकीज। रॉबिन ने जितनी भी कुकीज थी उसकी 3/16 खाई एंड फ्रेडी ईट्स 2/9 ऑफ द कुकीज, जबकि फ्रेडी ने जितनी भी कुकीज थी उसकी 2/9 खाई। सो हु ईट्स मोर, किसने ज़्यादा कुकीज खाई, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अगेन फ्रैक्शन गिवन है किसने कितनी कुकीज खाई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कुकीज क्वेश्चन में नहीं गिवन है। जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स नहीं गिवन थे तो हमने उसको कंसिडर करा था लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टेम्स बी 1। उसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कुकीज की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कुकीज को भी हम यहाँ पर लेट करेंगे 1। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ कुकीज, टोटल नंबर ऑफ कुकीज बी 1। हमने यहाँ पर कुकीज़ को मान लिया 1, टोटल कुकीज़ 1 है। अब एक तरफ आप लिखेंगे रॉबिन, पहले रॉबिन का नेम है तो रॉबिन हैज़, देन बॉक्स बनाएंगे और कंपैरिजन करना है हमें, दूसरा बॉय है फ्रेडी, सो फ्रेडी हैज़। नाउ रॉबिन के पास में रॉबिन ने कितनी कुकीज़ खाई, 3/16, तो यहाँ आप लिखेंगे 3/16 ऑफ टोटल। आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर ऑफ वर्ड लिखा है, फ्रैक्शन के जस्ट बाद में ऑफ वर्ड है। कभी भी फ्रैक्शन के जस्ट बाद में ऑफ वर्ड होता है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। और फ्रेडी ने 2/9 ऑफ, यहाँ पर भी ऑफ लिखा है तो हम फ्रेडी के कॉलम में लिखेंगे 2/9 ऑफ टोटल। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट 3/16, ऑफ की प्लेस पर आएगा मल्टीप्लाई का साइन और टोटल जैसा कि हमने लेट किया है 1, सो हियर इट विल बी 1 एंड दिस साइड 2/9 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल हियर 1. Okay, as we have done in previous question, when we multiply any rational number with 1 we get the same rational number or fractional number. So 3/16 will be multiplied by 1, so you will get 3/16. And 2/9 will be multiplied by 1, so it will be 2/9. Okay, now again you see students, numerators are different, denominators are different, so we will follow our method of cross multiplication. So by cross multiplication we will solve these fractions to calculate that which fraction is greater and which one is smaller. So we will write the fractions again in the next step, 3/16 and 2/9, and as we are doing we will make the sign of multiplication here and then multiply. This value will be written first, so 3 will be multiplied by 9, make one box in between, and 16 will be multiplied by number 2. Now multiply, so 3 9s is 27 and in the center we will make one box. 16 2s, so 16 2s is 32. Now compare from 27 and 32, the greater one is 32. Write the fractions again, so the fractions are 3/16 and other side it is 2/9, and sign is going towards that side, towards the right hand side. That means 2/9 will be greater than 3/16, and 2/9 is the fraction of which boy? 2/9 is the fraction of Freddy. That means Freddy has eaten more. Freddy has eaten more cookies. Okay, Freddy ने ज़्यादा cookies खाई है as compared to other boy Robin. Fine students. So A and B part was similar. Only there was some mistake in A part, so I request you to please make those changes in your A part in your maths book. Fine students, so we will do till here only today, and the remaining question of this exercise I will teach you in the next class. Okay, so that's all for today. Now I will meet you back in next online class. Until then you have to complete these both questions in your notebook by yourself. Avoid looking into the PDF, avoid looking into the video. Firstly play the complete video, understand the concept, and then keep on solving by yourself. Okay students, so that's all. Meet you back in next class. Till then you have to take care of yourself. Thank you students.